Hey everyone. I can see 5 people. Thanks for joining me, guys. So, ready for your questions? How do I... How do I get... Sorry, I'm doing this for the very first time. Okay. Show all controls. Hi, Usher. Hi, Max. Okay, I'm doing this live for the very first time, so I'm not too sure exactly how does it work, but I'll figure it out. Where's everyone? Let's see, this is my first YouTube live, so I'm not too sure. We do have 5 people. I can't see many people. Hi, Rizwan. Where do you see ETH heading after the merge? I think 2100 US dollars. I'm hopeful if everything goes well. By the way, I have created this poll where I'm asking you, would it go beyond 2100? So let me know. I think it should go. I think it should go 2600. Given Fed Reserve comes a little bit dovish, and Fed Reserve says that we are just increasing 50 basis point. If that happens, then Ethereum can go 2800, which is like FOMC meeting is on, I think, 13th of September. They are probably on TikTok watching. Okay, I shouldn't say anything. I wouldn't say anything to that, Max. So yeah, that's what I think Ethereum would be. I think it should go anywhere up beyond 2100. But mind you, people who bought Ethereum back in July or June when it was under 800 or 900, they would take profits and the price would dip a little bit. So I think that would happen. Okay. So do ask me more questions about anything about cryptos, about Ethereum or Bitcoin, or maybe Solana or Phantom or your favorite coins. I sometimes feel like I am an encyclopedia, a cryptopedia, I would say. The sky's the limit if Liz Truss doesn't start a war. She's very traditionalist, isn't she? She's quite conventionalist. Well, but I feel it will go up 2100 or even more before merge, and after that it will go down. Yes, obviously. I think हम लोग आने वाले हफ्ते में we may see 2800 Ethereum. It all depends on Fed Reserve. If Fed would be dovish, then yes, it would. Or once the price goes up, everyone will be taking profits. Price थोड़ा सा dip करेगी. That's true. It will be a sharp rise followed by a dip. Yes, dip would be because of the profit taking. Obviously, अगर मैं 800 पे मैंने Ethereum buy किया था जून जुलाई में और अब 2800 का हो जाता है Ethereum, so why shouldn't I take profits? Obviously, I'll take profits. That's how the investors would think. That's how investors think. She's mad. I don't want to say anything. Yeah, probably she is. I don't know. Like, she's traditionalist, and I don't get their mentality, to be honest. So do tell me what you guys do. We have 7 people there. So this is my first live. Do support me, guys. Do subscribe to my channel. I'm at 9K. I want to be at 10K, hopefully very soon.
People have lots of hopes with merge that gas fee will go down and it will be faster, but I doubt if this merge will fulfill the wishes. Hi Sajid. Um, देखो मर्ज जब होगा तो यस पीओडब्ल्यू से पीओएस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन पीओएस इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। लेकिन जो पीओएस करेगा वो ये करेगा कि रेगुलेटर्स को, पॉलिसी मेकर्स को बहुत खुश करेगा, जिसकी वजह से हम लोग शार्प देखेंगे एक इनफ्लो ऑफ रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड इंस्टीट्यूशंस टुवर्ड्स ईथ। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इथेरियम नेटवर्क ब्लॉकचेन इज अ वेरी अट्रैक्टिव वन, बट उनका जो पीओएस सिस्टम, पीओएस कंसेंसस सिस्टम है, सॉरी पीओडब्ल्यू कंसेंसस सिस्टम है, वो उनको ज़्यादा खुश नहीं कर रहा। तो जब ये होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो आई थिंक regulators and the policy makers would be the ones who will be very, very happy, and then we will see the inflow of investment and money towards Ethereum blockchain. Hi Kiran, thoughts about Gala. Gala पे मैंने कल I think एक वीडियो बनाई है. I have got very good hopes with Gala. In my opinion, Gala Solana की footsteps को follow कर रहा है in terms of growth and potential. So I really like Gala. I can see Gala 0.8 US dollars hopefully आने वाले 6-8 महीनों में. But yes, it has a lot of potential. Gala के पास बहुत सारी potential है to grow further. और द थिंग इज कि मेटावर्स और जो गेमिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर ऑल pretty progressive in terms of technology or in terms of attracting investors' interest and investors' attention. So I think Gala has huge potential to grow. Again, metaverse gaming is the future. Gaming, though, obviously, is always a lucrative industry, gaming key industry. Given metaverse is a very lucrative and a very attractive and a futuristic technology. So I think Gala, I'm very confident of Gala. Magar Luna ki uske baad, I should keep my mouth shut most of the time. I think Gala की अच्छी प्राइस है, अप्रिसिएशन होगी. बेस्ट प्राइस टू गेट इन गाला अभी अभी जो गाला की प्राइस जा रही है, आई थिंक इट इज ए गुड वन. लेट मी चेक फॉर यू. I'm doing this for the very first time, YouTube live. So agar there is something that is not working, do let me know. Gala. I think Gala is about the cheap buying price पे. You can buy Gala now. What are the reasons for HNT dump? Is there anything else apart from the decision of moving to Solana blockchain? देखो होता ये है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि वो सोलाना की ब्लॉकचेन पे उन्होंने प्रपोज किया है, डिसीजन नहीं लिया. इन माय बेस्ट नॉलेज उन्होंने अभी प्रपोज किया है कि वी मे मूव टू सोलाना ब्लॉकचेन. नाउ सोलाना का जो पीछे प्रॉब्लम आया है मार्च मई जून में, उसकी वजह से सोलाना की तरफ से बहुत सारे लोग वेरी हो गए हैं, लेकिन इट हैज गॉट इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. अब होता ये ऐसी सूरत में कि इफ यू आर नॉट टेकिंग इन्वेस्टर्स या योर कम्युनिटी इन कॉन्फिडेंस बिफोर इवन प्रपोजिंग सच मूव्स, तो चूंकि उनको पता नहीं होता, कम्युनिटी को पता नहीं होता कि आगे क्या होगा उस प्रोजेक्ट के साथ, तो आउट ऑफ फियर, एंजाइटी, uncertainty, they make these sorts of abrupt decisions. They make these sorts of not so good decisions. HNT Helium, in my opinion, it's a very good project. लेकिन अगेन बिकॉज आई बिलीव इन हीलियम HNT, तो ये जो डिप्स हैं, आई वुड टेक इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. Do you think some of the other popular and well-performing altcoins will see a decent rise due to Ethereum's merge? Definitely. Especially जो Ethereum killer कहलाते हैं, Solana, Phantom वगैरह, ADA, ये भी प्राइस अप्रिसिएशन देख सकते हैं गिवन वो इन प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअली अपने स्पेस में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं. ए बी जो प्रोजेक्ट्स, जो भी डैप्स, जो भी क्रिप्टो एसेट्स इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर रिजाइड कर रहे हैं, दे विल सी अ पंप. बट एट द सेम टाइम हम लोग मैक्रो लिंक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज अनलेस फेड 15 सितंबर को ये नहीं कहती है कि दे आर गोइंग 50 बेसिस पॉइंट या वी आर गोइंग डविश,
जो कि मेरे ख्याल से कहेगी, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट और एन एक्सपर्ट इन दिस स्पेस। तो हम लोग बहुत अच्छा प्राइस, हम लोग एक रैली देखेंगे, बेयर मार्केट में भी हम लोग एक रैली देखेंगे। थैंक यू किरण फॉर आस्किंग मी क्वेश्चंस। Strange that as soon as Liz Truss is announced, PM, the markets dipped. The markets obviously haven't forgot when she nearly started a nuclear war 6 weeks ago. Obviously, markets. No, see, अभी भी जो ट्रेडिशनलिस्ट पॉलिटिकल व्यूज को सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग, तो आई डोंट नो वो कौन सी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, बट द मिलेनियल्स एंड द न्यूअर जनरेशन डोंट सपोर्ट दोज व्यूज, राइट? हाय नकाश, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वेट एंड एसएलपी? देखो, वी चेन इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। इट्स अ चाइनीज गुड प्रोजेक्ट जो कि सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा है। मगर प्रॉब्लम चाइना के साथ जो हम लोग देख रहे हैं, ऑब्वियसली कोविड वहीं से शुरू हुआ, उसके बाद चाइना हैज बीन वेरी एंटी बिटकॉइन। वो अपने सैंक्शंस लगा देते हैं, दे आर वेरी अगेंस्ट बिटकॉइन वट एवर, बिकॉज दे वॉन्ट टू ऑब्वियसली पुश देयर ओन डिजिटल करेंसी विच इज डिजिटल यूएन। उसकी वजह से चाइनीज प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, जिसकी वजह से वेट वी चेन प्रोजेक्ट इज गेटिंग अफेक्टेड। अगर मैं इसकी वी चेन की फंडामेंटल्स को देखूं तो इट इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट, बट द नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट टुवर्ड्स चाइना इज नॉट हेल्पिंग इट। SLP is the dust of AXX XZ Infinity, तो मुझे SLP का कोई as such utility दिखती नहीं है। So basically when you're playing on the on the XZ Infinity के प्लेटफॉर्म पे you collect SLP, right? लेकिन उसकी utility क्या है? अगर उसकी कोई उन्होंने clearly defined utility रखी हुई है SLP की, then it would appreciate। लेकिन to me it's just a dust of AXS, worse than a meme coin, but that's my opinion. Where do you see ADA pre and post Vasil hard fork? अगर एडा डॉलर का भी हो जाए तो आई विल बी सरप्राइज्ड, बिकॉज एडा के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगेन अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, मगर दे डोंट वर्क ऑन देयर कम्युनिटी, दे डोंट वर्क ऑन मार्केटिंग देयर प्रोजेक्ट, दे डोंट वर्क ऑन द कम्युनिटी। एक्सआरपी ने क्या काम किया है? द रीजन एक्सआरपी इज स्टिल सर्वाइविंग, ऑब्वियसली उन वो प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है एक्सआरपी का। लेट मी जस्ट क्लोज दिस वन। रिपल लैब्स का जो प्रोजेक्ट है, रिपल लैब्स का प्रोजेक्ट इज वेरी गुड एक्सआरपी बिकॉज दे आर डिस्टर्बिंग द रेमिटेंस मार्केट। मगर द रीजन एक्सआरपी इज स्टिल स्टैंडिंग इज बिकॉज इट्स कम्युनिटी, और यही गलती एडा कर रहा है, यही गलती कार्डानो कर रहा है कि वो अपनी कम्युनिटी पे काम नहीं करते। दे आर वेरी साउंड टेक्नोलॉजिकली बट दे इग्नोर द कम्युनिटी, विच इज वाई अगर ये डॉलर का भी हो जाए तो आई विल बी सरप्राइज, लेकिन मे बी 0.8 0.7 मे बी। और अगेन अगर वासिल हार्ट फोक हो जाता है तो। Thanks a lot for Gala. One last question. What will be the pullback on HNT? मैं HNT को इतना follow कर नहीं रही, to be honest, but you can ask me on my Discord and I will look into it and I can reply to that question in detail. ADA makes announcement but never get anything done. Exactly. यही मसला इनका last September से चल रहा है, which is September 2021. मगर at the same time, again, as I said, they don't work on the community. ऐसे जब ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं या हार्ड फोक्स आते हैं या मर्जेस होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए टू कीप देयर कम्युनिटी इन्फॉर्म्ड एंड कीप देयर कम्युनिटी अवेयर कि क्या हो रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस मर्ज के बाद, एज एन एग्जाम्पल, या इस हार्ड फोक के बाद प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। व्हेन यू आर नॉट कीपिंग योर कम्युनिटी इन्फॉर्म्ड, तो जो इन्वेस्टर होता है वो कंफ्यूज्ड होता है, और फिर इस वक्त जो मैक्रो लिंक्स हैं, जो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो वैसे भी किसी भी मार्केट के फेवर में काम नहीं कर रहे। यही प्रॉब्लम है कार्डानो के साथ। अगर मैं कार्डानो को होली सोली टेक्नोलॉजिकली देखूं तो इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, फिनोमिनल प्रोजेक्ट। इट इज नॉट कॉल्ड इथेरियम किलर फॉर नो रीजन, इट हैज ऑल पोटेंशियल टू किल इथेरियम, बट अगर आप इथेरियम को कंपेयर करो, और जैसे इथेरियम का मर्ज आ रहा है, लुक एट देम, वो कितना ज्यादा अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्टेड है, वो मुस्तकिल हम लोगों को बता रहे हैं कि मर्ज आ रहा है, ये पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये पॉसिबल फवायद आ सकते हैं। सो वी आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इथेरियम एज ए कम्युनिटी। लेकिन एडा कार्डानो, they don't work very strongly with their community. That is their only problem. अगर if any Cardano developer is listening to me या वो मेरे videos को देखेगा, this is a very strong point for you guys. Do work on your community.
I joined your Discord group and then your premium before prices go up. Yeah, you did the right thing. You're right. Those of you who may not know, 11th of September से prices for my premium Discord group is going up to $50. अभी $30 है. तो अभी आपके पास तकरीबन संडे तक, आई थिंक संडे तक आपके पास टाइम है. इफ यू वांट टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड प्रीमियम ग्रुप, $30 है. 11 सितंबर से $50 हो जाएगा. सो मेक मोस्ट यूज ऑफ इट. Do you think DeFi projects will pick up? Will they be under security radar? Now, this is a very good question, Ashar. Um, DeFi, so देखो जो traditional financial institutions है ना, they are dying. अच्छा, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है. They are dying to jump into this space. But the problem with them, or the challenge they are facing, is that regulators or policymakers are not in line with this space because they want clear guidelines by the regulators, by the governments, that you have to work within these guidelines to get into this space. अब Ethereum का जो ये merge हो रहा है, it will attract a lot of regulators and policymakers in favor of Ethereum. अब फिलहाल ये भूल जाओ कि Ethereum का जो technological problems आएंगे उसको हम लोग फिलहाल नहीं discuss कर रहे. This merge will make Ethereum very happy, the regulators and policymakers very happy with Ethereum. Having said that, जो बहुत सारे traditional financial institutions हैं, जब वो DeFi के अंदर या वो अपने financial projects लेकर आएंगे DeFi के space के अंदर, तो और भी जो दीगर DeFi projects हैं, dApps हैं, ideas हैं, उनको बहुत ज़्यादा support मिलेगी. तो in my opinion, DeFi projects will be picked up. A, B, once Ethereum का ये merge successful हो जाता है, तो I think SEC and the regulators will be much more active and be happier to come into this space and explore or maybe give us more guidelines. By the way, ISO 2022 is the standard जिसको ये लोग implement करेंगे. So that standard is ready theoretically but not implemented yet. तो in my opinion, Ethereum का merge जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए एक नए राह, एक नए दरवाजे खोलेगा. I'm really enjoying premium, especially the TA classes on Zoom and the Zoom meetings. Thank you so much, Max. Yes, again, for those of you who may not know, subscription to my premium group doesn't only come with trading signals, spot or margin of futures or day trades या swing trades. सिर्फ उन signals के साथ नहीं आता मेरा premium. मैं बाय मंथली यानी कि महीने में 2 दफ़ा आई डू प्रोवाइड यू ट्रेनिंग कोर्सेज जहाँ मैं आपको सिखाती हूँ हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस, और वीकली हम लोगों की जूम मीटअप्स होते हैं ताकि आप लोगों के जो सवाल है वो मुझसे लाइव पूछ सको. इसी तरीके से बिल्कुल जिस तरह मैं यूट्यूब पे लाइव कर रही हूँ, टिकटॉक पे करती हूँ, आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो सवाल. अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब इन यूट्यूब. प्रॉब्लम मुझे टिकटॉक पे ये आ रही है, वो ये कि वो लोग मेरी वीडियोस को रैंडमली बंद कर देते हैं. आई डोंट नो व्हाई. दे विल टेक द वीडियोस डाउन या दे मे नॉट अपलोड इट. अगर मैं ये भी कह रही हूँ, आप लोगों को वार्न कर रही हूँ कि स्कैमर्स कमेंट में आके मुझे इम्पर्सनेट करके लोगों से कह रहे हैं कि जी लाइक प्रिटेंडिंग टू बी मी कि मैं इन्वेस्टमेंट करवा दूंगी आपका एंड ऑल. अगर मैं ये भी वीडियो पे वार्न कर रही हूँ आपको टिकटॉक के ऊपर, तो दे वुड not let my video go live. I don't know. So I'm trying to switch from TikTok to YouTube क्योंकि यहाँ पे मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आती है. As far as I'm following the community guidelines, I'm always safe on YouTube. So which is why I really want to switch from TikTok to YouTube because in my opinion, this is my safest space. Definitely, Ashar. I believe so. ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पे, ज़्यादा बिगर प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है. वीडियोस में ज़्यादा डिटेल में अपलोड कर सकती हूँ 15 मिनट की भी. टिकटॉक के ऊपर मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम आती है, लिमिटेशन होती है कि आई कैन ओनली अपलोड 10 मिनट्स वीडियो, और इफ आई हैव टू रिप्लाई टू समवन्स कमेंट तो फिर 3 मिनट का रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ. सो आई एम एंजॉयिंग यूट्यूब मोर. मैंने यूट्यूब पे शुरू पे काम किया था, बट देन I don't know why I just stopped doing it, but now I just want to switch from TikTok to YouTube. Where is the estimated bottom price of Bitcoin? Okay, a very good question again. अभी मुझे लग रहा है कि जो प्राइस रेंज है, आई थिंक 19,800 क्या है बिटकॉइन की प्राइस, इस वक्त मुझे एग्जैक्टली नहीं पता.
मगर अभी फ़िलहाल बिटकॉइन जो है इसी रेंज में, इसी प्राइस में रेंज करेगा। सो देयर आर 2 टर्म्स कॉल्ड, एक चीज़ कहलाती है रेंजिंग, जो कि अब मेरे ख़्याल से बिटकॉइन वुड रेंज विद इन द सेम ज़ोन। एक टर्म कहलाती है ट्रेंडिंग, जहाँ पे हम लोग बहुत स्पाइक्स देखते हैं चार्ट्स के ऊपर। सो आई डोंट थिंक सो इट विल बी ट्रेंडिंग, आई थिंक इसी ज़ोन में अभी रहेगा। और जैसे मार्केट में अभी खबरें आना शुरू हो गई, बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट फेड डज़, राइट? फेड वुड जस्ट दे विल जस्ट लीव लिटिल नगेट्स इन द मार्केट। तो अकॉर्डिंग टू दोज़ लिटिल नगेट्स, जो मार्केट में खबरें आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली दे विल बी गोइंग 50 बिप्स। अगर 50 बिप्स बढ़ाते हैं, सो इट विल बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर क्रिप्टो मार्केट। हम लोग एक अच्छी रैली देखेंगे। लेकिन अगर फेड ये कहता है कि नहीं 75 बिप्स पड़ रहा है एंड होपफुली नॉट 100 बिप्स पड़ रहा है, जिसके चांसेस हैं, जिसको हम लोग डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, तो यस 18,600, 17,800, 14-15 के भी हो सकता है। लेकिन माइंड यू, जब जून में 17,800 का हुआ था बिटकॉइन, तो आई थिंक फ्यू मिनट्स भी नहीं लगे थे एंड इट बाउंस्ड बैक, क्योंकि 17,800 के ऊपर बहुत सारे बायर्स बैठे हुए थे, वेरी वेरी बिग नंबर ऑफ बायर्स बैठे हुए थे, जिसने बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर लेके आया था। सो 18,600 इस वक्त प्राइस है बिटकॉइन की। इज दैट व्हाट यू आर सजेस्टिंग? आई थिंक हम लोगों को बाउंस बैक मिलेगा। सो 17,800 in my opinion should not be seen, but let's see. Again, all depends on Fed. If Fed says 50 bips point, we are good to go. If Fed says 75 bips point, then what are your thoughts on coins which performed during last bull run? Will they perform again, or newer coins will replace them? For example, Solana, can it cross its ATH or go above it? Again, a very good question, Ashar. इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट की इंडिविजुअल डेवलपमेंट। होता है ये कि जो सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर, दे आर जस्ट ऑन डॉक्यूमेंट, दे आर जस्ट पेपर वर्क, ठीक है? दे आर जस्ट शोइंग अस व्हाट दे आर गोना डू, दे आर इन अ बिल्डिंग फेज। तो जिस तरीके से हम लोग एक बिल्डिंग तामीर कर रहे होते हैं, बिल्डिंग बन रही होती है, तो उसमें आपको सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा होता है, बिल्डिंग तो नहीं होती, ना कमरे होते हैं, ना कुछ होता है। तो इस वक्त सारे प्रोजेक्ट्स उस फेज में हैं। अब इनको चाहिए फंडिंग, प्रोजेक्ट्स को मुस्तकिल फंडिंग चाहिए ना, क्योंकि इनकी जो एसेट प्राइसेस थी वो तो इतनी गिर गई हैं कि वो एसेट का सेल जो है उनको वो फंडिंग नहीं दे पा रहा। जिन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलेगी, दे विल परफॉर्म रिगार्डलेस उन्होंने बुल रन में पिछले साल अच्छा किया था या अच्छा नहीं किया था। इट्स ऑल अबाउट फंडिंग एंड देयर फंडामेंटल्स। सो इन माय ओपिनियन XRP, Ripple Labs, XRP would survive, XLM would survive. In my opinion, Solana, Phantom would survive. Ethereum, obviously. Just let me know more crypto assets. मुझे नाम मुझे अभी नहीं मेरे जहन में आ रहे, मैं बता सकती हूँ कि उनमें से कौन से survive करेंगे. ADA would should survive, because again, as long as they are getting funding and their fundamentals are strong, they will survive. और हाँ, चूँकि इस वक़्त बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रिसोर्सेज़ हो गए हुए हैं पूरी क्रिप्टो मार्केट के, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे आने वाले वक़्तों में। बिकॉज़ अभी अगर लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स शुरू करना चाहती हूँ, तो एवरीथिंग इज़ फॉर डिस्काउंटेड, सारे रिसोर्सेज़, डेवलपर्स, मार्केटियर्स सब मुझे बहुत कम सस्ते उसमें मिलेंगे, राइट? So I can build a project very easily as compared to building a project in bull run. So I have a lot of room to margin. हम लोग बहुत सारे ऐसे assets देखेंगे probably March April में, जो कि अभी इस वक्त build हो रहे हैं and they will come up pretty good. उनमें से BTCST is not necessarily out of those, लेकिन मैं BTCST के साथ बहुत ज़्यादा hopeful हूँ, a lot hopeful with BTCST as an example. What happens when miners can't make money because of the rising electricity bills? Will the hash rate drop affect the market? Definitely ऐसा होगा, which is why Ethereum POS पे जा रहा है, जहाँ पे 99.9% as per Ethereum's website, 99.9% energy consumption कम हो जाएगी if that happens successfully. तो will the hash rate dropping affect the market? It may and it may not. It's two-sided thing. इस वजह से ड्रॉप इस वजह से करेगा प्राइस, बिकॉज़ ऑब्वियसली हम लोग माइनर्स हम लोग को नहीं मिल रहे, तो उसकी माइनिंग नहीं हो रही, तो कम आ रहा है, तो सेल नहीं होगा। बट ऑन द अदर हैंड, इसके ड्रॉप होने की वजह से डिमांड बढ़ेगी, उस एसेट की डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ेगी। सो यू देयर आर टू साइड्स टू योर क्वेश्चन। लिंक एंड डॉट, चेन लिंक आई एम नॉट टू श्योर ऑफ। चेन लिंक मैं तकरीबन 1 साल से कह रही हूँ, चेन लिंक के लिए मैं श्योर नहीं हूँ।
I can't see much growth. I can't see much juice or room for chain link. Dot is a very good one, but again, dot polka dot के साथ भी यही problem है. They're not very much focused on their community. They're too much technologically driven. As I keep saying, कोई प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं है, अगर उसकी कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है, या वो प्रोजेक्ट या वो टीम जो है अपने कम्युनिटी पे काम नहीं करी, तो प्रोजेक्ट ज़्यादा फार नहीं जा सकता. पोल्का डॉट और कार्डानो के साथ यही प्रॉब्लम्स हैं, बट बोथ आर टेक्नोलॉजिकली वेरी साउंड, which is why in my opinion they are surviving so far. But they really need to work on their community support. Future of GLMR is good. GRT, no, I don't support GRT anymore. The graph, ek waqt tha jab GRT was performing really, really well, but not anymore. But GLMR is a good one. GLMR is Moonbeam, am I right? Coming back to Ethereum merge, what will happen to existing miners who have invested in mining rigs? Moving to POS will result in their investment loss? Potentially, yes, but at the same time, ये जो नए emerge हो रहा है, उसमें उन इथीरियम होल्डर्स जिसके पास सबसे ज़्यादा इथीरियम होल्ड कर रहे हैं या वो स्टेक कर रहे हैं, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो इन माय ओपिनियन जो ये POS बंद हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो द एग्जिस्टिंग इथीरियम वेल्दी पीपल और माइनर्स विल बिकम इवन मोर वेल्दी. तो डिपेंड्स ऑन, जैसे कि लेट्स से मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई अपनी रिग के ऊपर, लेकिन मेरे पास बहुत सारा इथीरियम है, ठीक है, तो आई विल हैव द प्रायोरिटी टू mine on a POS system, which means that my investment is safe. So again, there are two ways of looking at your question. Will the change the code movement ever succeed? Change the code movement. मुझे थोड़ा सा remind कराइए, what do you mean? Hi Nabil, thanks for joining. Doge Chain is a new coin which is introduced in market to support Dogecoin to perform many new functions. Does Doge Chain has a future or not? मैंने Doge Chain के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा, but I will look into it if that's what they're claiming. I'll look into it, और मैं आपको फिर आप just ask me again on Discord. I think I'm मेरे Discord पे हो Nabil. So do ask me that question again. I'll look into it and I'll reply to your question. I'll be leaving in 2 minutes, guys. So if you have more questions, do ask me. Please, मेरे channel को subscribe करो. I'm on 9,000. I want to be 10,000. Hopefully in 1 month. Hopefully. And of course, जब आप मेरे channel को subscribe करो, तो turn on your notification bell so that each time I upload a video, you are notified. Oh yes, they want to change Bitcoin code to proof of stake and increase supply. I understand. I don't think so that will happen. मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा. उसका reason ये है कि Bitcoin is the king. इसी देखो, Bitcoin is change the code के पीछे जो ये लोग कर रहे हैं, वो मेरे लिए इसी तरीके से है कि मेरे सामने किंग बैठा हुआ है, एक बादशाह बैठा हुआ है, और उसको as much as I don't like him, मैं उसको जाके कहूँ तुम चेंज हो जाओ, तुम अपनी ये पॉलिसी चेंज कर दो, या तुम ये चीज चेंज कर दो. How would that happen? I think that's what they are trying to do. I don't think so that's possible, क्योंकि we are almost near the ultimate supply, the complete supply of Bitcoin. So I don't think so that will happen, but we never know. Bitcoin will bounce back from here, or it will go more down towards 17K. 17,800 is the level जब जून में ये गया था, और वहां से मिनटों के अंदर ये ऊपर बाउंस हो गया था. तो मेरे ख्याल से अगर ये बहुत नीचे गया था 17,800 पे, हम लोग को बहुत massive number of buyers बैठे हुए हैं जो कि इसकी प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे. That's what I think. Having said that, as I keep saying, अगर फेड रिजर्व ये कहता है कि वो 50 बिप्स पॉइंट बढ़ाते हैं 15 सितंबर को, तो हम लोग एक रैली देखेंगे. लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हम 75 बिप्स पॉइंट बढ़ाते हैं 15 सितंबर को, तो देन मे बी 14-15 के बिटकॉइन हम लोग देख सकते हैं. Do you know anything about MUU coin? No, I don't. मुझे प्रोजेक्ट का नाम बताओ, and you can always ask me on Discord. I will look into it and I'll let you know. What is the fee for your premium group? It's $30, $30 for now. लेकिन 11 सितंबर से it's going up to $50. Sorry, yeah, 11 सितंबर से. So, yeah. Thank you everyone joining me. It was a very good experience. I did it for the very first time and I enjoyed it much more than TikTok, क्योंकि TikTok के ऊपर बहुत तेजी से comments आ रहे होते हैं, and it's very difficult for me to read and respond and reply, but this was a much better experience.
Thank you for joining me. I will hopefully be doing more of these. You post about portfolio management in Discord. What is it? Oh, yes, portfolio design, I would say. Management is when I would actually get access to your assets. I don't do that. I'm not regulated or authorized by FCA, so I can't do it. और अगर आपको कोई कह रहा है कि वो आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर लेगा भी तो बी वेरी 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 he or she has to be regulated and authorized by FCA. दो चीजें regulated and authorized both, then only he can manage your portfolio. What I say is portfolio design. पोर्टफोलियो डिजाइन का मतलब ये है कि मैं आपके लिए 10 से 12 एसेट चूज करूंगी टू टेल यू कि इन 10 से 12 एसेट को आप ट्रेड करो प्लस इन्वेस्ट करो विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विच इज यूजुअली 1 to 3 months और 6 to 12 months डिपेंडिंग ऑन आपका कितना बड़ा पोर्टफोलियो है एंड देन आई टेल यू व्हिच वंस टू trade, invest, and we would be looking if you're working with me when I'm designing your portfolio. So we are looking into something anywhere between 100 to 200% profits over a period of 1 to 3 months within this stagflated and very bearish market. इसमें मैं आपको 100 to 200% profits. I would design your portfolio so that you can have 100 to 200% profits. अक्सर लोग ये पूछते हैं कि what will be my role? My role will be of a navigator and you would be on the driving seat. So I would not touch your any asset. You have control access to your assets, but you will be doing as I would be telling you कि इस टोकन को खरीद लो, इसको बेच दो, अभी इसको ट्रेड करो, अभी इसको ट्रेड ना करो, अभी इसको होल्ड करो, इसकी बाइंग प्राइस ये होनी चाहिए, इसकी सेलिंग प्राइस ये होनी चाहिए. सो बहुत आसान जबान में मैंने समझाने की कोशिश की. इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस टू आस्क मी ऑन डिस्कॉर्ड, मैं आपको डिटेल में समझा सकती हूँ. But yeah, that's what portfolio design is all about. Keep coming live on YouTube. Glad to see you here. Thank you, Nabil. So good that आप join कर सके मुझे. Thank you, Samir. It was really good to see you all. Do subscribe to my channel and do turn on your notification bells. Thank you, everyone. I'll be hopefully doing these more. Thank you.